Hello बच्चों, let's start National Science Olympiad practice state for previous 5 years questions. Okay, so the first is which part of the plant makes food using sunlight? Plant का ऐसा कौन सा part है जो sunlight की help से food बनाता है? Root, stem, leaf, flower. So the answer is that is leaf. Okay, and leaf is also called as the food factory of the plant. Okay, during the making the food they use sunlight, water and air, and that process is called as photosynthesis. Which animal gives us milk? नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसे कौन से एनिमल है जो हमें मिल्क देते हैं? hen, cow, dog, parrot. So the answer is cow. cow जो होती है ये एक डोमेस्टिक एनिमल है और वो जो है वो मिल्क देती है और मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है. which sense organ which sense organ do we use to smell things? Options are eyes, ears, nose, tongue. So the answer is nose. This is the sense organ which we use to smell the things. Okay, yes. Which food gives us energy to play and work? नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फूड है जो हमें एनर्जी देता है? वाटर, राइस एंड ब्रेड, वेजिटेबल, सॉल्ट. ओके, so the answer is that is rice and bread which are in rich with the carbohydrate. That's why it gives the energy. Okay, so देखो बच्चों, आपको क्या करना है, आपका जो आंसर है उसे नोट डाउन करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. इन विच सीजन डू वी वेयर हेवी वुलन क्लोथ्स? कौन से सीजन में हम हेवी वुलन क्लोथ्स पहनते हैं? समर, मानसून, विंटर, स्प्रिंग. सो द आंसर इज विंटर. विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज अंडर द सॉइल? नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो सॉइल के अंदर ग्रो होता है? लीफ, फ्लावर, स्टेम, रूट. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. सो द आंसर इज रूट. रूट ग्रोज अंडर द सॉइल. अब वो क्या करता है? वो वाटर एंड मिनरल सॉइल से एब्सॉर्ब करता है और बाकी जो प्लांट का जो पार्ट है उसे वो सप्लाई करता है. व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ? अर्थ पे वाटर का सबसे बिगेस्ट सोर्स कौन सा है? रिवर, पॉन्ड, ओशियन, वेल. सो द आंसर इज दैट इज ओशियन और सी. इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. विच ऑफ these animals can live both on land in water? नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसे कौन से एनिमल है जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहता है? काऊ, फ्रॉग, ईगल, हॉर्स. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. सो द आंसर इज फ्रॉग. हाउ मेनी टीथ डज अ ग्रोन अप पर्सन यूजुअली हैव? कितने टीथ होते हैं? 20, 28 to 32 teeth, 10 teeth, 40 teeth. So the answer is 28 to 32 teeth. Okay, these are the permanent teeth. Okay, and children generally have 20 milk teeth. Which gas in air do we breathe in to stay alive? Options are carbon dioxide, nitrogen, oxygen, hydrogen. Okay, नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से आपको सही चुनना है. So the answer is oxygen. Okay, we breathe in oxygen and our lungs take oxygen from the air and send it to all parts of our body. Okay, yes, and we breathe out carbon dioxide. Okay, इस तरह से ये वीडियो हमने कवर किया है. इस वीडियो में हमने आपके हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाए ऐसी कोशिश की है. आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया so do like, share and subscribe.